So, Unacademy GATE and ESC Civil Engineering going to bring you a surprise, and that surprise will benefit you a lot in your future preparation, and especially adds you more opportunities in terms of your career, jobs, PSUs, and also in terms of getting IIT admissions, and also make you learning with Unacademy top educators. So, guys, somebody can guess what is going on. Sir, what happened? Nothing. No, sir, it's audible. Audible? Yeah. So, It's guys, fine. somebody of you can guess what is going on, what we are going to launch here, what is new coming up in Unacademy. Somebody can guess. So, I would like to invite Jaspal sir and RP sir and ask Jaspal sir to reveal what is the surprise to happen here in Unacademy. Sir, over to you. थैंक यू केपी सर. इस महीने काफ़ी सारे नए इनिशिएटिव्स अनअकैडमी ने लॉन्च किए हैं. लाइक लास्ट वीक वी रोल्ड आउट द फर्स्ट एवर ऑफर इन विच द प्राइस वाज रिड्यूस्ड टू अराउंड 11,000. मोरओवर लर्नर्स हमेशा यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आइदर वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच और सम ऑफर इज गोइंग ऑन फॉर देम, विच इज़ नॉट द केस दिस टाइम. इस टाइम वैसा कोई केस नहीं है. काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी पिछले 1-2 सालों में एस्पिरेंट्स की कि गेट का एग्जाम में जो कंपटीशन है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ता जा रहा है. मतलब लेवल का प्रिपरेशन इतना हो गया है कि अब हम देखें कट ऑफ वो भी बढ़ती जा रही है. अगर हम टॉप रैंक देखें उसके मार्क्स भी कंपैरेटिवली बढ़ते जा रहे हैं. सो इट इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टू क्रैक गेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज द लेवल ऑफ द प्रिपरेशन इज इंक्रीजिंग. सब बच्चे तैयारी करते हैं आज के टाइम पे. The access to the quality material is available to almost all the aspirants. So it becomes difficult for those learners जिनकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं होती IIT और NIT को क्रैक करना. उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी आई है. अब क्या अपॉर्चुनिटी है? That civil engineering aspirants can give the GATE examination through environmental science and engineering. और उसमें देखा है कि पिछले 2 सालों के अंदर जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली कम है. मोर if you want to get some IIT or NIT with the help of the environmental science score, it is also comparatively lower. मतलब 50 से लेके 60 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है सिविल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस में अगर आपको सेम IIT में सेम कोर्स लेना है. तो उसी अपॉर्चुनिटी को हम एस्पिरेंट्स के सामने और अच्छे तरीके से लेके आए हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग एनवायरमेंटल साइंस गोल ऑल्सो. अभी तक आप सिविल की तैयारी करते थे अनअकैडमी के ऊपर, अब आप एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर सकते हैं सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर. सो इट इज द फर्स्ट प्लेटफॉर्म विच इज गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू लर्न एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग फॉर गेट एग्जामिनेशन, विच इज अ ह्यूज विन-विन सिचुएशन फॉर सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स. कैसे हैं? सेशन में बने रहिए, आपको ये बताएंगे कैसे एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स बेनिफिशियल होगा आपको ड्रीम IIT और NIT में सीट सिक्योर करने के लिए, और इसके थ्रू आप काफी सारी जॉब्स भी सिक्योर कर सकते हैं. तो अगर इसको डिटेल में लेके जाएं, इफ यू फर्दर गो फॉरवर्ड इन डिटेल, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि यार एक नया गोल, एक नया एग्जाम देंगे हम. सिविल इंजीनियरिंग की तो तैयारी कर ही रहे हैं. अभी सर आपने बताया कि इसका सिलेबस इतना ज्यादा है, कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है, तो एक एनवायरमेंटल साइंस गोल और लेके आए तो यहाँ पर तो हमें और तैयारी करनी पड़ जाएगी. यू टू फर्दर स्टडी, ये तो और प्रेशर दे देगा, विच इज नॉट द केस. अभी भी जो सिविल इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स हैं एनवायरमेंटल साइंस देते ही हैं. अभी जो आप देख रहे हैं, सर ने अभी टॉपर का इंटरव्यू भी लिया था. लास्ट ईयर भी जो टॉपर था हमारे प्लेटफॉर्म से ही था. तो मोस्टली सिविल इंजीनियरिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं वो एनवायरमेंटल साइंस के थ्रू एग्जाम दे रहे हैं, पर अभी कोई स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म नहीं है, सिलेबस नहीं है, कोर्स नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है जो ये तैयारी करा रहा है. दैट वी आर ब्रिंगिंग फॉर यू एस्पिरेंट्स. तो इसको डिटेल में समझने के लिए आरपी सर, कैन यू थ्रो सम लाइट कि कैसे जो एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग का सिलेबस है वो सिमिलर है और डिफरेंट है देन सिविल इंजीनियरिंग? Yeah. Sir, actually many people are having the doubt what you have raised. So we need to do separate preparation for all the subjects, or we need to do the combined preparation, right? Single preparation, like that they'll be having the doubt. So here if you just observe the syllabus, right, this first one, mathematical foundation syllabus, if you observe section 1, and this is exactly same to same as that of GATE only. So there is no separate preparation required for this
environmental science, right? So most of these, not only the section 1, many of the sections also, so they will be covered in the civil engineering syllabus only, so that only little bit extra effort is sufficient enough. Little bit extra effort is only sufficient enough. They need not study all the 13-14 subjects separately. So some people will get fear like 13-14 subjects we need to study or not, like that. So it is not the case, you can say. So mathematics, if you just observe, so GATE, whatever they are preparing for this environmental science also, same they will be preparing, sir. So sir, section 2, if you just next, sir. Section 2, if you just observe environmental chemistry, so mostly this is a little bit new, you can say, right? In our environmental engineering, you might not be studying, but if you observe that +1, +2 level, you might have come across all these stuff. They might have come across all these topics, but these little bit extra. This portion will be little bit extra. They have to study, sir. Section 3, next. So next. This is also a little bit, they don't study it, biology related and all these things will be there, microbiology, right? So cell chemistry, cell biology, right? The section 2 and section 3 are little bit extra, they have to study, but in my opinion, they are not that much tough, you can say, right? Because exactly, because all the engineers do these topics in their physics, chemistry. In fact, some of the engineers take bio also in their 11th and 12th. So, in fact, they are giving the exam of environmental science and engineering now also. And out of the entire syllabus, these two sections have a very less weightage. Very less weightage. And the proportion is very less. And that too, they are giving these things for the first time now, so they will not be going into that much depth as MBBS students are studying, in my opinion. So this is already civil engineering syllabus, you know, so water resource and environmental hydraulics, right? So a very huge weightage subject they will be studying in the civil engineering also, right? Here they need not only section 2 and section 3, they have to study extra, but this one, it is a part of civil engineering syllabus only, sir. Section 5. And we can add here one point, sir, because when we compare with GATE civil engineering and GATE environmental, we see last 3-4 years paper, maths and aptitude is somewhat lower level when compared with the civil engineering. For civil engineering, the students are preparing very complicated problems, especially in math. Math is very tough for civil engineers, sir. They are out of 13 marks, they are going to score only 7 to 8, maximum 10 marks. But here, last year students got 13 out of 13 in mathematics. Level, because this environmental science right by science students also, the level of maths will be compared to, when compared to civil paper, it will be very less. We can expect the civil students can crack full marks maths and aptitude, 28 out of 28 we can expect also, sir. Yeah, obviously engineering students will be having little bit edge in the mathematics, right? Because of their hard process they'll go through, sir. So and for encouragement purpose also, this they will should be highlighted that environmental science and engineering paper can be given by civil engineers also, environmental engineers also, and the aspirants who have done the graduation in science, BSc, MSc in life sciences. So they will keep all these students in mind and they will set an intermediate, a common paper. And out of all this bunch, civil engineers are the smartest. Yeah, means their aptitude is comparatively on higher side. So they have an edge. They have an edge in this particular goal because they have to compete with the aspirants who will be lacking in the engineering topics, which are common to civil engineers. Yes, we have seen last year rankers also, no, sir. Most of the civil engineers only top rankers in this paper. Exactly. Not environmental engineers, not life sciences students. Civil engineers only top rankers, sir. No doubt about it. Next one, section 5, sir. If you just observe, in the section 5 also, water and wastewater treatment and management, right? So this is also not a new topic, you can say. This is also obviously the civil engineering portion only you can have. Sir, next one, section 6, air and noise pollution, right? So it is separately, KP sir used to take separate topics on this air and noise pollution, right? So every time students are also asking, sir, noise pollution, air pollution topics, right? So this is also as a part of environmental engineering, the students use it to study, right? So only that chemistry and microbiology, right? So that environmental chemistry and microbiology, except those two topics, right? Remaining all topics are familiar. Civil engineering students are familiar with those topics only. And
as sir said, mathematics is also very easy compared to others, right? By keeping them in the by keeping other science students in mind. So obviously the aptitude levels of engineering students will be little bit higher, the thinking capability also will be little bit higher. So my suggestion is, all civil students, you attempt this paper, right? Whether you will join or not, it does not matter, right? You decide later, but you prepare for this, right? With a little bit extra effort, you can fulfill your dream of becoming an IIT, and you can say, right? So for Exactly. that matter, it is very, very important. Now, this is global and regional environmental issues, right? This is the general topic, you can say. And anywhere, those who are preparing for ESC also, they will be coming across these topics, I can say, right? It is also not a new topic, right? ESC people, obviously it will come into picture. Environmental management and sustainable development. So these topics also, they will come across mostly in their BTech, and but these are also not that much in depth, you can say, right? But a little effort is sufficient enough to study all of this, right? So Only most of the learners who prepare for GATE, they prepare for engineering service exam also. engineering service For exam. engineering services, this is GS This is paper, compulsory. yes, They have to compulsory. do energy and environment paper. Same syllabus is there. They have around 10 to 12 questions from energy environment. The syllabus they have to prepare for it, though no extra efforts. So it can balance both the ES paper. Even students are asking ESC general studies, energy environment required. So in this, it is going to cover. Obviously, they can solve extra questions in GS 10 to 12 questions. Both will be helpful here by doing this. So, but by this, what we can conclude is, those who are preparing for GATE and ESC, just they have to study that environmental chemistry extra and microbiology extra, right? That's it, right? Exactly. Only those two sections Means extra. out of 9 Then sections, you cannot only see. 2 sections are required, and they can give an exam in a separate goal. Means a complete subject they can appear for. Yes. Exactly. And if we see the numbers, अगर हम numbers के ऊपर ध्यान डालें, वेटेज की हम बात करेंगे रैंडम डिटेल में, सारी चीज़ों को हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। एक बार बस आपको फैमिलियर बना लें कि हाँ, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो और गेट का पेपर इससे भी लिख सकते हो। क्योंकि जब कोई नई चीज़ होती है, उसके बारे में जब जानकारी कम होती है, तो उसमें अच्छी रैंक लाने का, अच्छा स्कोर लाने का चांस ज़्यादा होता है। तो अभी नया सब्जेक्ट है, 2 साल ही हुए हैं इंट्रोड्यूस हुए, तो इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है इस स्ट्रीम के अंदर। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है अभी, जो अगले 2 सालों में, 3 सालों में गेट लिखने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद तो फिर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो सेम उतना ही कंपटीशन हो जाएगा जितना सिविल में कंपटीशन है। तो इस बात को समझाने के लिए इफ आई शो यू दी नंबर्स, तो ये नंबर्स आपके सामने हैं, ऑफिशियल नंबर्स हैं आईआईटी के। इफ यू सी दैट इन ईयर 2024 जो एस्पिरेंट्स सिविल में अपेयर हुए थे इज अप्रोक्सीमेटली 85,000 और 2023 में अप्रोक्सीमेटली 83,000 थे, तो बढ़ गया नंबर, इट इज इंक्रीज बाय 2,000। पर अगर आप देखोगे ईएस के पेपर में, ये भी पिछले 2 साल से आ रहा है, इन 2023 इट वाज अराउंड 6,000, इन 24 इट इज अराउंड 6,500। तो नंबर यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है, पर अगर सिविल से कंपेयर कर रहे हो, ये बहुत ही छोटा नंबर है। इफ आई कंपेयर दिस विद सिविल, इट इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल। तो जो परसेंटेज चांसेस है सिलेक्शन होने के, वो कंपैरेटिवली ज्यादा है एनवायरमेंटल साइंस से। आपका जो स्कोर होगा वो कंपैरेटिवली अच्छा होगा एनवायरमेंटल साइंस के अंदर। जो कंपटीशन है वो कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि ये जो 6,500 बच्चे अपेयर हो रहे हैं, इसमें सिविल इंजीनियर भी हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियर भी हैं, और जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं। सो हियर द चांसेस इज कंपैरेटिवली बेटर। तो अगर आप इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हो, द चांसेस ऑफ गेटिंग आईआईटीज, एनआईटीज एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज विल ऑल्सो इंक्रीज। तो अगर हम इस नंबर को देखें, नंबर ही काफी चीजें हमें बता देते हैं कि हाँ, अगर हम इस डायरेक्शन में भी एफर्ट लगाते हैं, द रिजल्ट विल बी कंपैरेटिवली बेटर। इसी चीज को आगे out of this 6,400 seriously preparing aspirants, those who are targeting aspirants are maybe 2,000, 2,500 only, not more than that. That also you are having already, you fixed the rank around 2,000, 1,500. So if you are really serious, top 100 में आने के बहुत ज्यादा chances है, बहुत ज्यादा चांसेस है, बिल्कुल। और इसी चीज को अगर हम आगे लेके जाएं कि यार हाँ, अगर हम एनवायरमेंटल साइंस से एग्जाम लिखते हैं तो कम स्कोर पे भी हमें आईआईटी मिल जाती है, ये बात भी क्लियर करता है डाटा। सो केपी सर, इफ यू थ्रो सम लाइट दैट इफ वी गिव द एग्जामिनेशन थ्रू एनवायरमेंटल साइंस, व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज व्हिच वी कैन अवेल। मतलब एक एस्पिरेंट ये सोचता है कि मुझे क्या फायदा होगा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस, व्हाई आई शुड प्रिपेयर 2 मोर सब्जेक्ट, पहले इतना सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट और क्यों तैयार करूं, क्या एडिशनल बेनिफिट है सर इसके? या पहले तो ये बोलना पड़ेगा, आप एनवायरमेंटल साइंसेस सिलेबस देखने के बाद, सो एज ऑलरेडी आरपी सर टोल्ड,
extra syllabus chemistry, biology. And nowadays, student is not preparing for a single exam. Student is preparing for GATE, ESC, SSC JE also. And SSC JE science and technology syllabus only, whatever, first chemistry, biology. So you can first of all, if you are targeting one time preparation all exams, SSC biology also is there here. Biology, chemistry, no extra, because I have taken a third ranker the interview recently. He told me how you cracked chemistry, biology. I asked him. He told that, sir, I prepared for SSC same chemistry, biology helped me to crack the rank. So that it will help for, if you take syllabus of GATE and ESC General Studies, Energy, Environment, SSC chemistry, biology also will helpful. So by this single environmental science and engineering preparation, civil engineering GATE and ESC you can give, environmental science GATE you can give, SSC exam you can write, and also you are going to write general studies paper in engineering service examination. Along with that, so many state boards, we know BPSC sanitary manager, so many vacancies came previously, and also recently Andhra Pradesh APPSC assistant environmental engineer posts are there. As it is, syllabus is similar to what we discussed just now. Same. So most of the states have pollution control board officer, environmental assistant engineer posts, so many. And also recently, last year we have done CPCB scientist. Most of learners know we have conducted so many sessions. CPCB scientist syllabus also similar to same paper. So many opportunities, because nowadays awareness, and also government is also going to take care about pollution control, solid waste management. They are recruiting more people to create, improve the employment opportunities and enhance the hygienic conditions. So because of that reason, opportunities nowadays, government opportunities go on increasing. But most of the students don't know about the career job opportunities. And a few PSUs also recruiting through environmental. We've seen recently EAL, 6 posts are there through GATE environmental. But obviously, it is not for GATE civil, BTech civil students. It is for BTech environmental students. And maybe in future, some chance is there for GATE civil engineering students also. They can give. And before last year, BAS has recruited through BTech civil also. BTech civil and GATE environmental score. BAS has recruited scientist post. So like that, job opportunities are there. But here the number of job opportunities directly through GATE, very limited for BTech civil engineers. You must be in top 10, top 20. Then easily you can get any one of the PSU job opportunity. But indirectly, as I told now, every state have assistant environmental engineer, sanitary officer post. Every state can conduct individual exams. Syllabus is as it is the same. Indirect opportunity. It will help CPCB scientist post also. And besides all this, everyone's dream, most of the GATE aspirants' dream is to enter into IIT. So if, for example, in GATE civil paper, you can get a score of 500. For that score of 500, you have to get around 50 to 55 marks. By that score of 500, you can get new IIT only. It is not possible to enter into top IIT. But in the same marks, 50, 45 marks, GATE environmental science paper, a score of 500, you can get around. And you have a chance to enter into top IIT. Under your rank will be around 250 to 300 rank only. Maximum opportunities are there here. Over to you, sir. Definitely. So now we can do the comparative analysis that if we give the GATE examination through environmental science and through civil engineering, what is the difference of the score via which we can get the same branch? Yes, sir. Over to you, Rajendra Prasad, sir. Sir. See, if you just observe this comparison, right, for GATE 2023 cutoffs for IIT Madras, you can say, right? So whenever you are observing for IIT Madras, this environmental engineering, so these are all the different disciplines, you can say. So what is that general cutoff? 542 you can observe, and it goes up to 399 for this SC students, you can say, right? So these are all the people, those who can get into the environmental engineering through this, you can say, right? These many branches people and these many disciplines people are attending, but still it is 8,000 applied and 6,000 attending the examination. So even though these many branches are allowed, the competition is very, very less, right? If you wanted to get into IIT Madras, so this is very, very easy, you can say, right? 542 is the one, right? Yeah, so see, sir, here means there's a difference of 70 marks. A civil engineering student getting environmental engineering at a score of 613. 630. But if you go by environmental science, you get the same branch at a score of 542. So almost Means, yeah.
70 marks is 70, there. 70, 70 plus mark, 70 plus score difference is there. So 70 plus score difference means it is a very huge difference. You can say even average normal way if you study also it is possible to get through. Exactly. And this is of IIT Madras. Means you Yes, can directly enter into IIT Madras. 80 buttons. You can get the tag of IIT Madras, and further you can, if you want to pursue masters, that's fine. You can, because most of the aspirants utilize this time to prepare for other competitive examination, engineering services. So sufficient time they can get, and moreover they will get the degree of IIT also. So one point I can add here, sir. This 540 score they are getting by 51 marks. In that 51 marks, maths and apti 28 marks completed. Exactly. Maths and apti. Then our regular environmental engineering syllabus, additional solid waste management course and air pollution course mostly will cover this actually. So to get top rank, we have to cover the extra syllabus. To become in the top 100, top 50, we have to cover the extra syllabus. By civil engineering syllabus, getting 50, 51 marks and getting into IIT Madras is obviously good. And also IIT Madras environmental is the best branch. So overall, most of the learners can choose IIT Bombay, IIT Madras only for environmental. Good placements also there. Our last year students also there in that branch. They're having good opportunities, placements also. And also one more advantage is they can apply for interdisciplinary. And in that interdisciplinary, actually, PSUs also coming for recruitment, placement in IIT Madras. So that also one of the edge the student can utilize here. Sir, next IISc Bangalore ka cutoff if you just observe. Next one, the civil engineering 800 and materials engineering that is 700 you can say. And here 800 cutoff and there it was previously it was 542 something like that. And obviously IISc Bangalore will be having little bit higher cutoff even for all branches generally. For all branches. So, for all branches it will be. So for environmental science also it is continued you can say, right? So except IISc Bangalore and remaining IITs, it can be easy to get into through which I can say. And whenever you are observing this, sir, next one. Yeah, coverage will be complete. That's why we are taking the session here that we are launching environmental science goal. Separate goal ही launch कर रहे हैं civil engineering के साथ, जिसमें आपको पूरा environmental science का syllabus कराया जाएगा, aptitude, mathematics, जो भी technical portion है, चाहे वो civil का है और जो extra topic है वो भी cover कराए जाएंगे. तो उसके लिए सेशन में बने रहिए. सारी इन्फॉर्मेशन अभी आपको दे रहे हैं. We are giving all the information to you. No, sir. One their query is already for the existing plus learners. Will that course will be covered? That clarity. Definitely. We'll inform that also. That one. Okay, go ahead. So through this ES environmental science discipline, right? They can enter into these are all which one? Those who are having this ES discipline. So they can enter into all these branches, right? Especially in this IISc Bangalore only, you can find all these entrances because a lot of research will be going on there. So in IIT Madras, we don't find that many specializations available for these students. But IISc Bangalore, if you observe now, so almost equal to that of civil, we can say. Yeah, that many several branches are also there. Nanoscience is there, ecological science is there, sustainable technology. Means options are huge. Options are huge. So there is no question that so whether we can get or not, right? So kabhi to kuch bhi milega, right? So that is what we can say. Sir, in other IITs, IIT Kanpur, if you just observe, they are also having only one, but IISc Bangalore is only having a huge number of specializations with entry, but IITs are having one or two entries only, we can say. So environmental engineering, management, and if you just observe here, right, what is that? These three branches, right, 547 only. Almost it is same as that of IIT Madras. Only IISc Bangalore is little higher, almost a 300 jump we are having. But this IIT Kharagpur also almost at the same level of IIT Madras only. And if we are entering into next one, IIT Kanpur, so that IIT Kanpur also we can see that almost it is 595, right? So next slide. 595 only. 595 a little bit higher compared to IIT Madras and this one we can see. So yeah, this is 648 for GATE 2022. For 2023 it was lesser, and for 2022 it is a little bit higher, you can say. And Exactly. yeah, 2023 it was lesser, 2022 it was a little bit higher. This is 2023 IIT Kanpur
595, right? With 595 score, they can enter, right? Compared to IIT Madras, they are having little bit higher score is required. But here it is moving around that 550, 500 to 600 in between only it is moving, we can say. So even you need not get 800 like IIT, ISC Bangalore, but 500 to 600 in between, it is sufficient enough. IIT Delhi, if you observe also, that is around 600 only, 600 for general and this 450 for other categories, we can say, right? It is always moving, swinging from which one, 550 plus 50 to minus 50, that's it, right? Except that ISC Bangalore, right? So if you are keeping this score in mind, if you are keeping this score and keeping this numbers in mind, so even if you are studying, if you are putting little bit effort also, it is possible to get into the top IITs. These are all top IITs, not the newly formed IITs, you can say. Always in the top IITs, you can find the opportunities. So there is no lack of opportunities, you can say. And this IIT Bhubaneswar 550, so almost same way we can say. This is for 2022 cutoff, we can say. Yeah. Now, some of the aspirants are asking, sir, what is the further scope? Scope क्या है इसका? तो Abhishek sir has also joined. Welcome Abhishek sir in the discussion. तो बच्चे पूछ रहे सर, अगर environmental science के थ्रू हम गेट लिखते हैं, एक्स्ट्रा तैयारी करते भी हैं इससे, तो हमें बेनिफिट क्या है और क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे लिए अगर हम environmental science के थ्रू एग्जाम देते हैं तो? थैंक यू सर, आई थिंक मेरा वॉइस क्लियर होगा. यस, तो सर देखो, एनवायरमेंटल साइंस बच्चों को एक एड ऑन है. मेरा मानना है कि थोड़े से प्रिपरेशन से उनको एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलती है मास्टर्स करने का, रिसर्च में जाने का, पहला बात. दूसरा बात, जो बच्चे टीयर 3 कॉलेज या लोअर कॉलेज है, जिनका एक एम होता है कि मेरे को एक टैग चाहिए, आईआईटी का टैग चाहिए, मुझे यहाँ से कुछ करना है, तो उनको एट द लोअर, जैसा कि अभी आप लोग बता रहे थे कि अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तब भी आप वहां पे स्कोर कर जा रहे हो. और इन द पास्ट ईयर्स जो हमने देखा है, जब जितने भी बच्चे रैंक लाए हैं, जिन्होंने भी टॉप 1000 तक भी रैंक है, क्योंकि उनका स्कोर बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो इफ दे स्कोर इन दैट पर्टिकुलर रेंज, उनको आसानी से एमटेक करने का ऑप्शन मिल जाता है फ्रॉम द टॉप आईआईटीज. तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है. एंड वी नो वंस यू आर इन द आईआईटीज, आपका प्लेसमेंट कहीं ना कहीं अच्छी जगह मिल जाता है अगर आप टॉप आईआईटी से कर रहे हो तो सर मैं मानता हूँ एक एडवांटेज ये होता है कि आपको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है इन द फ्यूचर. साथ ही साथ आपके पास एक आईआईटी का टैग या टॉप कॉलेज का टैग आपके पास रहता है, जो कि आपको फ्यूचर में हमेशा काम देगा ही. बिल्कुल. तो ये पूछ रहे थे अपॉर्चुनिटीज क्या है. अपॉर्चुनिटीज एक तो मास्टर्स कर सकते हो आप, रिसर्च में जा सकते हैं. दूसरा, डायरेक्टली पीएसयू के अंदर भी रिक्रूटमेंट हो रही है एनवायरमेंटल साइंस के थ्रू. लिस्ट ऑफ द पीएसयूज इन फ्रंट ऑफ यू. डीएसटी है, बीआईएस है, ईआईएल है, एनएचपीसी है, ओएनजीसी है, डीआरडीओ है, सीएसआईआर है, डीएई है, एनडब्ल्यूआरआई है. डायरेक्टली ये पोस्ट और वैकेंसीज निकालते रहते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की. इनफैक्ट अभी केपी सर ने बताया कि जो सिलेबस है एनवायरमेंटल साइंस का कॉमन है बहुत सारे और एग्जाम के भी. इसका मतलब अगर आप एनवायरमेंटल साइंस के गोल पे तैयारी कर रहे हो, नॉट ओनली यू विल बी गिविंग द गेट एग्जामिनेशन, पर इसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाएंगी. पीएसयूज तो हैं ही, और भी बहुत सारे एग्जाम दे सकते हो जो अभी पास में आए हैं. मतलब पिछले 1-2 साल में देखोगे, बीपीएससी का असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर, सेम सिलेबस है एनवायरमेंटल साइंस का. एचपीएससी का असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर, देन राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनवायरमेंटल ऑफिसर, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एनवायरमेंटल ऑफिसर, एंड सो ऑन. तो और भी बहुत सारे एग्जाम है जो आप एनवायरमेंटल साइंस के सिलेबस कंप्लीट करने के बाद दे सकते हैं. तो अपॉर्चुनिटीज तो आपकी ऑब्वियसली खुलती हैं, रिजर्व अपॉर्चुनिटीज हैं ही, और हम ये सारे एग्जाम भी क्रैक कर सकते हैं. ऑल दीज एग्जामिनेशन कैन आल्सो बी क्रैक्ड. अब जो मेजर डाउट आ रहा है एस्पिरेंट्स को कि प्लस के जो एस्पिरेंट्स हैं सर, उनको क्या एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, क्या सिलेबस की कवरेज होगी या नहीं होगी, अगर गोल सेपरेट है तो क्या हमें अलग से इस गोल को लेना पड़ेगा, अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. तो इसके लिए मूविंग टू यू केपी सर, can you throw some light on all these queries which the aspirants are having? Yeah. So guys, exclusively for already existing learners, no need to pay any extra fees, no need to take any extra subscription. The courses are included. Environmental science courses, whatever we are taking, those are included in civil category goal also. No need to worry regarding this. You can get the additional syllabus completion. You can get whatever required for environmental science and engineering paper with your existing plus or iconic subscription only. No need to worry. And those learners, exclusively those who want to prepare for environmental, until now those who have not taken any subscription,
especially your friends will be there from BTech Environmental Engineering, your friends are there in life sciences branches, and also your friends from chemical engineering also, they are interested to write environmental paper. So inform them we are launching new batches for GATE Environmental Science and Engineering. And एक बात तो इधर बोलना पड़ेगा, पूरा इंडिया में कोई कोचिंग सेंटर में ले लो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का इतना सारा बैचेस में पढ़ लिया, 2 टीचर्स है, एक तो जसपाल सर है, दूसरा मैं है. सो टॉप टीचर्स ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आर हियर टू गाइड यू. पेपर तो नया है, बट टीचर तो नया नहीं, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड टीचर्स है आपके पास. They can show you the light and they can enlighten you to get the top rank in environmental paper, because we taught that many batches for environmental engineering throughout our career. We taught with that subject only, and you have the best opportunity to study from the most experienced teachers. And we are launching batches from April 30th. Jaspal sir are going to start with solid and hazardous waste management 8 a.m. and I am going to launch with hydrology 11 a.m. And when you take this solid waste and hazardous management, most important for environmental paper, you can get around 10 to 12 marks. When we see last 4 years papers are there, that 4 years papers weightage you can observe. More questions are coming from solid waste management, that much important. And hydrology also around 5 marks you are getting last year paper, before last year. Hydrology also having 5 marks. So you can gear up your preparation with this new batch, Sankalp batch for GATE 2025. And existing learners, you just spread the word. Please understand, you just spread the word. Your favorite teachers and most experienced teachers launching new goal. पूरा इंडिया में अभी तक environmental science and engineering के लिए कोई coaching नहीं है. No one is going to teach this. So we are here to support the learning community and make your preparation easier with our experience. Exactly. म्यूजिक लवर, अभी हमने डिस्कस किया था कि 9 सेशंस हैं, 9 सेक्शंस है पूरे इसके अंदर. 9 में से सिर्फ 2 सेक्शन ही नए हैं, बाकी सारा कॉमन है सिविल के साथ. तो आपको बस 2 सेक्शन ही अलग से प्रिपेयर करने हैं, एक केमिस्ट्री है और एक माइक्रोबायोलॉजी है. बाकी सारी चीजें कॉमन है सिविल इंजीनियरिंग के साथ. मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, और जो टेक्निकल सब्जेक्ट भी देखोगे उसमें एनवायरनमेंट है पूरा, फिर एफएम है, हाइड्रोलॉजी है, सॉइल का थोड़ा बहुत कंसेप्ट है, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी का कंसेप्ट है. तो मोस्टली चीजें ओवरलैप हो जाती हैं सिविल के साथ. तो काफी अभी अपॉर्चुनिटी है सिविल एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि उनको बस 2 ही टॉपिक सेपरेट करने हैं. तो मेरे हिसाब से आप सबको एनवायरमेंटल साइंस के थ्रू भी गेट लिखना चाहिए, एक एडिशनल पेपर लिखना चाहिए, ताकि और भी स्कोप खुल जाए आप लोगों के लिए. एंड टू हेल्प यू इन दिस प्रोसेस वी आर लॉन्चिंग अ न्यू बैच ऑन April 30th. सर ने भी बताया कि 2 टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं इसके अंदर. 2 टॉपिक्स वी आर स्टार्टिंग. ये गेट 25 और गेट 26 दोनों के लिए हैं. दोनों एस्पिरेंट्स जो 25-26 को टारगेट कर रहे हैं कैन ज्वाइन दिस बैच. और अभिषेक सर, लास्ट वीक पहली बार हमने काफी बढ़िया ऑफर लॉन्च किया था अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, विच वाज फर्स्ट टाइम इन लास्ट 5 years. ऐसा ऑफर नहीं आया था और काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला उसके अंदर, और काफी एस्पिरेंट्स बोल रहे थे कि हमने उस ऑफर को मिस कर दिया है. तो उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या कुछ बेनिफिट है हमारे पास अभी? जी हाँ सर, जैसा कि ऑफर आया था और बहुत कम ड्यूरेशन के लिए था, तो बहुत बच्चे उसको मिस कर दिए थे. तो सर हम बच्चों की तो हमेशा ही सुनते हैं, तो ऑफर को वापस से ला दिया गया है सारे बच्चों के लिए, जिसमें आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो प्लस का एट जस्ट 11,999. मतलब सर ये ऑफर ये है कि मतलब जो भी बच्चा, वो भी बच्चा जो पढ़ना चाहता है बेस्ट टीचर से और लाइफ पे और द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, तो आप ज्वाइन कर सकते हो. इट्स ओनली 11,999. तो अगर आप प्लान कर रहे हो पढ़ने का, बेस्ट टीचर से पढ़ने का, आपको सिविल पढ़ना है सिविल पढ़ो, आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है सब पढ़ो. अब तो सब एक जगह हो गया भाई. ऑप्शनल पेपर भी साथ में आपको मिल रहा है, आपका मेन गोल भी आपको साथ में मिल रहा है. तो अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. तो 11,999 फॉर 1 सब्सक्रिप्शन. एंजॉय करो, मस्ती से लिखो, एंड वी आर प्रॉमिसिंग द बेस्ट कंटेंट विल बी डिलीवर्ड विदाउट एनी डाउट. सर तो ये चीज सिर्फ 1 ईयर पे नहीं आया है, मैं यही बता दूं, ये 2 ईयर आरंभ पे भी जो ऑफर था दैट इज 19,999 वो भी कंटिन्यू चल रहा है. साथ ही साथ अगर आप आइकॉनिक पे जा रहे हो, इफ यू गो फॉर द आइकॉनिक आल्सो द सेम ऑफर दैट इज 17,999 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन एंड 25,999 में आपको 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है. बिल्कुल सर.
नेक्स्ट जो एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि नहीं सर ये वाली भी अगर प्राइस देखे काफ़ी ज़्यादा है हमारे लिए, तो उनके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी है, 21 अप्रैल को लॉन्च कर रहे हैं। आरपी सर, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर द एस्पिरेंट्स? Yeah, sir, especially this is useful for those people economically from weaker background. So they cannot afford this 11,999 also. So, and they are having the zeal of studying and getting into the IITs, they can utilize this opportunity. And the opportunity is like that, if they are getting the rank within 1 to 5, 100% scholarship is given, right? They need not pay a single rupee also, right? So here is the opportunity. Without paying single rupee also, you can you can do your preparation for this GATE and ESC examinations, and that too with environmental science extra, right? So that is what we can say, right? Suppose if your zeal is there but little bit lesser intelligent, right? And then up to 50th rank, right? Ranks up to 50th, so that 30% discount is given in this, right? So little a bit of price will be there. So I recommend all of you to attend this scholarship test on 21st April, that is tomorrow at 5 p.m. Don't miss this and get the scholarship. If you are getting 100% scholarship and studying freely, so it is you'll be helping your parents also, and you'll be helping yourself also technically. And so this much opportunities are given by Unacademy. Utilize these opportunities. Once these are lost, you may not get them again. So once they are available, you utilize these opportunities and crack your exams. डेफिनेटली सर, इसका मतलब तीन हमने ऑफर्स और तीन हमने अपॉर्चुनिटीज रोल आउट करी हैं एस्पिरेंट्स के लिए आज के सेशन के अंदर। एक तो नया गोल ही लॉन्च कर दिया आपके लिए एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग का। तो जो भी एस्पिरेंट्स गेट में एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग से पेपर लिखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देन जो प्राइस है सब्सक्रिप्शन की उसको 50% ऑफ कर दिया, इट इज़ रिड्यूस टू अ नेग्लिजिबल प्राइस। अप्रॉक्सीमेटली 11-12 हज़ार में आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। इसमें टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी आपकी, पूरा डिजिटल कंटेंट भी मिल जाएगा आपको, और अब तो दो गोल है, सिविल इंजीनियरिंग भी और एनवायरमेंटल साइंस भी है। और उसके बाद 21 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट भी, जिसमें आप अप टू 100% स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब कोई रीज़न होना नहीं चाहिए एस्पिरेंट के पास कि नहीं, पहले तो हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होता था तैयारी करने का, फिर कॉस्टिंग का इशू होता था। अब ये सारी चीज़ें ईज आउट कर दी हैं अनअकैडमी ने विद द बेस्ट ऑफ द कंटेंट अवेलेबल इन द मार्केट। सो अब कोई हर्डल आना नहीं चाहिए आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर। So any last words, KP sir, for the aspirants? So previously we are having a huge fees. Now around 50 to 60% fees is reducing. एक बात तो बोलना पड़ेगा इधर, this much most experienced teachers, this much quality content, इतना कम प्राइस में मिल रहा है आपको। अभी तो ले लो सब्सक्रिप्शन, बाद में प्राइस हाइक भी हो जाएगा। अभी सब्सक्रिप्शन ले लो, शुरू करो आपका प्रिपरेशन, क्योंकि एक सब्सक्रिप्शन में 2 गेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। गेट सिविल को तैयारी हो जाएगा, गेट एनवायरमेंटल साइंस को भी तैयारी हो जाएगा, और विथ बेस्ट टीचर्स इन द इंडस्ट्री। नो डाउट रिगार्डिंग इट, एवरी टीचर विल सपोर्ट यू, गाइड यू एट एनी टाइम, नो वरीज रिगार्डिंग इट। योर प्रिपरेशन में साथ साथ में हम रहेंगे। whenever you want a helping hand guiding, we are always ready. So somebody is asking benefits of subscription. Mr. Check the last Monday. That is what we are talking, benefits of subscription. If you take subscription, structured course, subject syllabus, पूरा को पूरा classes खत्म हो जाएगा आपको। You get a entire syllabus covered by top educators. You get good notes. You can be solved with PYQs. You have online test series, and you have everything to crack the exam. If you take subscription, you can get everything to crack your exams and dreams with top educators. Okay, guys. So do enroll yourself and make your friends also. They must know that GATE Environmental Science and Engineering is going to be started by Unacademy top educators. So I hope you will avail this opportunity. Until then, let's crack it. Let's crack it.